Hello friends, and welcome to another edition of Cricket Caviar. And today we have taken a topic bit out of our comfort zone and little bit fun, little bit away from the serious cricket stuff that we normally do about Test cricket, about Test series, and all those stuff. So we are talking about the upcoming IPL Yeah, auctions, and it is a big reset in IPL history, which we have not seen in the last 14 years. We saw a big reset in 2012, but we have never seen this big mega auction since the first IPL. So we will be having two more teams this time. So that makes 10 teams, and there is a pool of 592 players to choose from. And it's going to be just awesome. We'll have our eyes on this auction, but just before we go deep dive into it, I'll just like to explain that auction the is a unique thing about IPL. Other T20 leagues have still not adopted, the auction. So PSL and BBL, even these leagues have draft, and they don't go for the auction. And draft is just it's more a hit or miss kind of thing, not like you bid money on that. So Kunal, are you excited for yeah, the yeah. upcoming auctions? Yes, I'm really excited. I get excited for this day every year, and more than often it turns out. I mean, we get to see a lot of surprises, right? I remember in the last auctions, the fast bowlers were going for loads and loads of money. I remember, I think Sam Billings made a tweet that my girlfriend was saying that why are you not playing as a bowler? Pat Cummins became a millionaire last time. We had Ben Stokes becoming a millionaire before that, and yeah, auctions have always been interesting. Sometimes we have uncapped under 19 players earning crores. Then we have Yeah, Arjun Tendulkar coming in at 20 lakhs. So let's see how and last it's going auction, to be this time. last auction, Yeah, one more surprise was Glenn Maxwell, and getting for 14 crores after five yeah, bad seasons in Kings 11, and he yes. proved that he was worth that, and now he has been retained also. Yeah, I mean, that was So the biggest guys, surprise last season. Yeah, absolutely. this And one shock auction for me is, was David Willey not getting picked last time. I really wanted him picked this time. Really, IPL is missing out on a champion player. yeah, we'll come to David Willey later. IPL auction is this mega auction is a great chance for other teams to level up. Like we have seen that CSK and Mumbai, especially these two teams, have pulled away from the rest. Mumbai is having 5 IPL trophies, and CSK is having 4 IPL trophies out of the 13 editions that have happened. So there have been two by KKR, one by RR, and one by Deccan Chargers, one by SRH. So other teams have not, but this is a great chance for teams like Punjab, Rajasthan, and RCB to build a strong side if it's possible. I mean, RCB has had a lot of chances; they've not been able to do though. Yeah, they But have. but yeah, so Kunal, will get straight into it now. So I'll be Yeah, sharing my screen now, and we'll just yeah, man. Can't wait to discuss that and yeah. just analyze the auctions. This is So always fun. Like this is something we get to do only once in a year. IPL auctions. This is really fun. So I have prepared something like first, just to get into the context of the auction. So this is what has happened before the auction. So this is all we are discussing about happened pre-auction. So in December, teams have made their retentions for next year. So CSK have retained four of their big players, and their purse is only 48 crores. 90 crores purse was given to all teams, initial purse, and now it is down to 48 crores. Similarly, for Rohit Sharma's Mumbai Indians, they have also spent out the entire possible. They have tried to maintain the core. What do you have to say, Kunal, about MI and Yeah. CSK and KKR retentions? To be Like, honest, what do you yeah. feel? To be honest, for CSK, I would have loved to see uh, Sam Curran actually took out of the Faf auctions. I Duplessis. would have loved to see, no, not Fab Place. I would have loved to see kya naam hai uska bhai? Yeah, our new up and coming all rounder. Uh, yeah, Shardul Thakur in place of Moin Ali. I mean, they have Shardul Thakur. retained Okay. two spinners, right? Jadeja and Moin Ali. They should have kept Shardul Thakur. That would have given a much better balance to the team. Now
I mean, they did not even keep Deepak Chahar. So I think the team looks a little imbalanced from that aspect. They have put a really big bet on Moeen Ali, who is delivering right now. He's in good form. No wonder he did really well for England, leading England. But maybe Shardul Thakur would have made more sense here. For Mumbai, I think it's completely I would fine. in fact Yeah. say that maybe Josh Hazelwood deserved a retention. Maybe I feel like his performance last year was very good, and he's a critical depth plus power play bowler, and that Yeah, he value, is. Yes. that demand supply is very very thin right now. Death bowler and power play bowler. So I feel that Josh Hazelwood maybe, but MI's retention is perfect. You think MI have done the perfect job in terms of So, retention? well, MI had a lot of difficult players to choose from, like letting people like Trent Bolt or Ishan Kishan go was never going to be easy. But yeah, I think this is the best they have done. They have maintained the core, which they always have since many years. I think things are made easier by Hardik Pandya moving on. But yeah, Mumbai has pretty much retained their core. Then And in terms of KKR, I think maybe they don't have, I mean, they can stop investing so much in Sunil Narayan now. I mean, yeah, he has maybe won them Andre one trophy, Russell but also. Andre Russell has not, delivered. I mean, he does the job as a death bowler, but not as the finisher that they need. And still, they don't have that not as a champion player. Yeah, he finisher. used to be. Yeah, I still feel Venkatesh Iyer has not proved himself enough. Like he had a very good one season, but based on one season, if you are retaining someone, it's not like how CSK and Mumbai have retained. So KKR have definitely they have followed a different path here. So anyway, coming to other teams, DC retention looks very solid. They are the one with the least purse, 47.5. So they have Rishabh, Aksar, Prithvi, and Norkia. So they have let go of Yeah, Shreyas Iyer, obviously. And what do you think of DC's retentions, Kunal? yeah, it's pretty good. DC retentions are pretty good. No concerns here, and I'm pretty sure Rishabh Pant and Ricky Ponting will do really good this season as well. And RCB retained Virat RCB. Kohli, Glenn Maxwell, and Mohammad Siraj. They did Yeah, I not. think this was. I think there's something we all knew this is going to happen. For the longest time, I'd been thinking probably Maxwell will be their captain, but maybe not so. Let's But see. if you see in They could RCB's have. retention, आरसीबी का रिटेंशन अगर देखेगा कुणाल तो मतलब हर टीम ने सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन कर लिया, एमआई ने रोहित शर्मा को रिटेन कर लिया, वेंकटेश, हर टीम ने अपने ओपनर को रिटेन किया है एक्सेप्ट आरसीबी, मतलब पृथ्वी शॉ भी दिल्ली में है, ठीक है, जॉस बटलर, यशस्वी दोनों ही, मतलब आरआर के तो दोनों ही ओपनर्स ही रिटेन है. हाँ, बट आरसीबी unless and until Virat Kohli is going to open, they have not retained an opener as per se. So that will be a big gap to fill. If Virat Kohli is going to open, then I'm fine with it. But opener is a very critical role in T20s. Like, It what do you definitely think is. of Plus RCB's RCB. retention overall? Like, RCB is building a new team, so okay. But I would have. It would have been better had they kept retained Chahal as well, especially after looking at him playing the first one day. Maybe they could have kept Chahal. yeah, Chahal is going to be in On demand. Yeah, on Rajasthan, I think Rajasthan's retention is fine. They anyways could not retain Stokes or क्या नाम है नहीं, उसका? राजस्थान तो सिंपली टॉप 3 Stokes को or रिटेन कर Archer or लिया whatever. है. टॉप 3 को ही Yeah, the top रिटेन कर three. लिया है राजस्थान. They have not Top three is used going any to be the same. they've kept it really simple. I mean, they've not used much brains on You this. know, I feel Uh, they would have wanted to retain Chetan Sakaria as well. He was bowling very well, but I'm pretty sure he decided not to get retained because he knows he'll go for big bucks in the auction. Okay. So coming to SRH and Punjab now. So I feel SRH का retention मुझे पता नहीं सबसे खराब लगा. They have retained Kane Williamson, Abdul Samad, and Umran Malik. But this is like really weird. कि मतलब they're looking too much into the future. I feel like. They let go of Jason Abdul, Roy and Johnny Bairstow. I mean, not a good way to go about things, but they have no openers, they have no death bowlers, they have no all-rounders. I mean, Abdul Samad क्या leg spin थोड़ा बहुत करते हैं, but they have no all-round. These are the three critical things that you need to have: death bowler,
and not even a power play bowler. They don't have any of the critical links in the T20 game, and I feel that is going to cost them a big time. And at least I am happy with Punjab's retention, because I think they have retained one opener and one death bowler. So that is a good move by Punjab. So at least they have a good purse also, and they retained one opener and one death bowler. And maybe they could have retained Bishnoi or someone who went to Lucknow now. Bishnoi to ab Lucknow chala gaya. Yeah, Bishnoi would have been a really big bet. Punjab is a team which feels that they have refreshed their team multiple times. They've still not been able to build any core or build any constant set of players, constant captain or something. Maybe that's Players why they also are unable to excel as a team. Players also don't want to like stay in Punjab. KL Rahul, I mean, Yeah, it does feel so. It does feel so. KL is now captain of a new team. So Lucknow, they have 59 crores and Ahmedabad have 52 crores. So this was recently announced. These new teams have picked 3 players before the auction itself: KL Rahul, Ravi Bishnoi, and Marcus Stoinis. I feel Lucknow has done a good job here compared to no. Both teams have done equally well, I guess. ठीक है, but Lucknow has more purse. So let's see, वो 7 crores जो extra है, maybe they can utilize it better. But Marcus Stoinis, do you think Kunal, that Marcus Stoinis like deserves to be picked pre-auction? उसको तो auction में ही ले सकते थे, वो तो मतलब यार. Marcus Stoinis is good, but he's not that great a player who you want to keep in your team पहले से. If Stoinis से कोई किसी और को ले सकते थे, I could have taken a little more established player, Even for Ahmedabad, I feel Shubman Gill is, I mean, he's young, he's good, but would you want him ऐसे पहले से ही? I'm not sure. Shubman Gill को actually KKR को retain करना चाहिए था. KKR made a mistake by retaining not retaining Shubman Gill. मतलब उन्होंने Andre Russell, Varun Chakravarti, Venkatesh Iyer and Sunil Narayan. Sunil Narayan and Andre Russell का I think age कितना ही हो चुका है, तो maybe they should have looked a bit into the future. I feel Shubman Gill should have been retained by KKR, but let's see how he does now. So coming to this part of the presentation, Kunal, we are going to discuss the missing links, obviously. So do you think like Jasprit Bumrah does a great job at the death, but do you think they lack one more death bowler? Maybe they would love some. They're going to miss Bolt so much. Starting maybe, end maybe. Yeah, they're going to miss Bolt. They're going to miss Ishan Kishan. They need a spinner as well. और लग नहीं रहा कि बोल्ट और ईशान किशन को ये लोग ले पाएंगे, क्योंकि मतलब दोनों बहुत डिमांड में होंगे, राइट? हाँ, वो ज्यादा, और दोनों प्लेयर्स को लेना बहुत मुश्किल होगा. पर्स कम है मुंबई के पास, आई मीन सीएसके, मुंबई, डीसी और केकेआर के पास पर्स कम है. तो स्पिनर विल बी वन ऑफ द प्रायोरिटीज, आई थिंक, अ गुड इंडियन स्पिनर. तो कुणाल, हु डू यू सी इंडियन स्पिनर्स में? अगर हम okay, we'll go into this later. Let us cover all the teams. So CSK is lacking a death bowler. Maybe वही जो मैं बोल रहा था कि Josh Hazelwood was doing a very good job. Shardul Thakur was doing, as you said, a very good job. Yeah, they don't even have a frontline bowler, so their bowling already looks slightly weak, to be honest. Yeah. दीपक चहर को छोड़ दिया, वो भी एक बहुत बड़ा गैम्बल है. आई मीन धोनी के लिए यार, धोनी को नहीं कर सकते थे रिटेन, बट ठीक है. सीएसके का अलग ही फिलोसॉफी है. वो कॉर्पोरेट, हम उसको कॉर्पोरेट लॉजिक में कंपेयर नहीं कर सकते. वो एक अलग ही ट्रेडिशनल वो लोग चला रहे. एंड केकेआर ऑब्वियसली दे आर लैकिंग a death bowler. I mean, Andre Russell is not reliable at death. Neither Varun Chakravarti nor Sunil Narayan is going to bowl at the death. So definitely, death bowler and batters. Yeah, finisher maybe. DK was a good finisher actually, but he has not been retained. Neither is Morgan there now, so that will be. Yeah, I think KKR के पास कुछ भी नहीं है. देखा जाए तो they lack in all departments. And obviously DC का यार, DC के पास
एक ओपनर तो उनको लेना पड़ेगा, मतलब पृथ्वी शॉ, धवन को उन्होंने रिटेन नहीं किया, एंड मे बी मिडिल ऑर्डर में उनको बैटर्स चाहिए, वो भी बिकॉज श्रेयस अय्यर नहीं है अब, तो दे विल मोर लुक फॉर बैटर्स आई थिंक, बिकॉज ठीक है पेसर उनके पास नॉर्किया है, और एक पेसर स्पिनर आ भी जाएगा अक्षर कहीं ना पटेल है, कहीं से। अक्षर पटेल है स्पिनर, दे हैव डन अ गुड जॉब एट द रिटेंशन। ठीक है ऋषभ पंत लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है या उनके पास, दे हैव डन क्वाइट अ गुड जॉब। एंड आरसीबी अगेन आई सी अ लॉट ऑफ, सिराज तो डेफिनेटली डेथ में बॉलिंग नहीं करने वाले हैं, और ना ही इनके पास कोई फिनिशर है। एबीडी का वैक्यूम बहुत बड़ा हो गया, एबीडी बहुत बड़ा का। हो गया, बहुत बड़ा हो गया। They heavily depend on 2-3 players, और मैक्सवेल का पता नहीं हाउ गुड ही विल बी दिस सीजन, सो अ बिग गैम्बल फॉर आरसीबी एज वेल। एंड स्पिनर्स भी उनको देखना पड़ेगा, मुंबई और आरसीबी आई स्पिनर्स, थिंक। बॉलिंग तो है ही नहीं आरसीबी के पास, दिस आई मीन सिराज है बस, बट हाँ, या आई उस मीन हम हिसाब से बॉलिंग केकेआर ने राजस्थान के पास नहीं है। नहीं, राजस्थान के पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास बस टॉप 3 है, टॉप 3 बस टॉप है 3 राजस्थान के है। पास। उन्होंने सिंपली सिर्फ टॉप 3 को रिटेन कर हाँ लिया है, बाकी नहीं। केकेआर यार, मैं तो सोच और रहा था कि, हाँ मैं तो सोच रहा था कि हम्म, राजस्थान वाले कैप्टन भी शायद चेंज करेंगे, पता नहीं, मे बी दे वांट टू स्टिक विद संजू सैमसन, कैप्टन नहीं चेंज कर वो तो सकते अभी हैं, डिक्लेयर बटलर कर वो दिया है। कैप्टन, हाँ बटलर वो नहीं इट्स कैप्टन नहीं बना ऑलरेडी सकते, आउट, बटलर एनीवेज पूरा पूरा सीजन नहीं खेलने वाला है, तो या नहीं इट्स ऑलरेडी आउट कि संजू इज गोइंग टू बी द कैप्टन। बट सीएसके एंड केकेआर हैव डन वेल ऑन स्पिनर्स, एटलीस्ट दे हैव मोइन एंड जडेजा एंड वरुण एंड सुनील नारायण। सो राजस्थान रॉयल्स को तो सब कुछ ही चाहिए अभी, पूरा ही टीम बनाने, डेथ बॉलर, फिनिशर्स, ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स। तो ऑक्शन, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, ऑक्शन में जब सारे टीम्स बड़े बड़े प्लेयर्स खरीद लेंगे तब राजस्थान आएगी छोटे छोटे प्लेयर्स खरीदने के नहीं लिए। एक बड़ा तो आई थिंक डेथ बॉलर इनको लेना पड़ेगा, अगर क्रिस मॉरिस उनको चाहिए, जैसा ही कोई, मे बी इनको डेविड विली विली को के लिए जाना पड़ेगा आई थिंक, डेविड विली के लिए। they should go for RVD definitely. हाँ RVD हाँ fits into a Rajasthan player personality, पता है, let's see. एनीवे Yeah, कमिंग last टू few teams. एसआरएच, तो बहुत एसआरएच को तो सब कुछ ही लेना है, इट्स सिमिलर टू राजस्थान, इवन वर्स देन राजस्थान बिकॉज दे डोंट इवन हैव द टॉप 3, एंड They just have a ऑब्वियसली captain. दे जस्ट हैव अ कैप्टन। और पंजाब का भी बहुत कुछ उनको देखना पड़ेगा, स्पिनर्स, बैटर्स, फिनिशर्स, एवरीथिंग New उनको सब team. कुछ देखना पड़ेगा। राहुल को भी, मतलब राहुल लखनऊ को भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बट दीज प्लेयर्स हैव एटलीस्ट ऑलराउंडर्स, इनका है, नई टीम्स ने एटलीस्ट ऑलराउंडर्स ले लिए अपने अपने, मार्कस स्टोइनिस और हार्दिक पांड्या, ये दो ऑलराउंडर्स हैं, बड़े बड़े नाम है मतलब। ठीक है अभी राशिद sure खान भी हार्दिक पांड्या थोड़ा will बहुत। bowl though. वो देखना हम्म, पड़ेगा। वो इसलिए मैंने ऑलराउंडर्स लिखा है। एक्चुअली आई एम नॉट श्योर हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू फिनिश और बोल, so that's why I've written finisher and all-rounder again, even though Hardik Pandya can do both the jobs, I've written it down Can do again. both the jobs. Anyway, Let's so see. this is the gap, like if you see, this is the total supply on the right most column, and you have the demand on the second column. So death bowlers एक ऐसा चीज है जो सबके टॉप प्रायोरिटी में है। द गेम चेंजेस, आई थिंक डेथ बॉलर्स एंड फिनिशर्स, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। Yes. तो इफ यू सी इनका सप्लाई ज्यादा नहीं है, डेथ बॉलर्स का 20 देख के लग रहा है कि बहुत सप्लाई है, बट क्वालिटी नहीं है, सारे बॉलर्स उतना अच्छा नहीं हाँ करते हैं, हाँ मतलब ये 20 में से एक्चुअली 5 या 6 होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस देन बिटवीन 5 एंड द नेक्स्ट 15। तो फिनिशर्स का भी सेम है, quantity may be 13 but quality is not that much, but these are the game changes and you need to have the best of them if you want to give your team an edge. And obviously openers are the next critical thing. Openers का ये है कि supply is very good, in fact international में 11 openers है, जो I think ये मैंने अपने हिसाब से बनाए कि मतलब कि who I think is going to be a definite हाँ। pick. एंड ऑब्वियसली यू हैव ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर्स तो बहुत हैं वैसे, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, फास्ट ऑलराउंडर्स, बैटर्स का हर टीम को जरूरत है, स्पिनर्स भी हर टीम को जरूरत है, एमआई को स्पेशली स्पिनर्स देखना पड़ेगा, एसआरएच को देखना पड़ेगा, दे लॉस्ट राशिद खान, दैट इज अ बिग नेम दे लॉस्ट। पावर प्ले बॉलर्स सबको ही देखना पड़ेगा, मे बी आरसीबी
के पास सिराज है जो पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, एसआरएच में भी उमरान मलिक से कराएगा और डीसी तो नॉर्के से करा लेगा, बट बाकी लोगों को देखना पड़ेगा। तो पावर प्ले बॉलर ठीक है, लेकिन डेथ बॉलर भी वो काम कर सकता है, तो दैट्स व्हाई आई रिटन डाउन कि पीपी जॉब कैन बी डन बाय द डेथ बॉलर। तो if you are bowling at good death bowler, I think that will be the main thing going into this IPL along with हाँ the finishers. हाँ, लेकिन पता है So वो let's ये देख के लगता है कि एक्चुअली काफी प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शन विल बी इंटरेस्टिंग, काफी प्लेयर्स की so रिक्वायरमेंट्स। so let's talk about the finishers, Kunal. Like I feel that मैं अभी एक bold prediction यहीं पे कर रहा हूँ कि I think शाहरुख खान is going to be the highest uncapped player of this IPL. मैं ये prediction शाहरुख अभी से खान, कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है डेफिनेटली शाहरुख दैट इज अ खान। बिग पॉसिबिलिटी। शाहरुख खान कैन बी द हाँ, हाईएस्ट पेड अनकैप्ड प्लेयर। दीपक हुड्डा है। मैंने विष्णु विनोद को काफी हाई रेट किया है क्योंकि मैंने उसे एक्चुअली देखा है कुछ मैचेस फिनिश करते हुए। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर फ्रॉम केरला। ऑब्वियसली दिनेश कार्तिक है अभी भी कमेंटेटर, रियान पराग है, कृष्णप्पा गौतम है, सरफराज खान है। तो ये रैंकिंग्स मैंने अपने हिसाब से दिए हैं कुछ प्लेयर्स को विच आई फील आर द top ranked, which I feel are the bottom ranked. Obviously opinions vary. Kunal may have a different opinion. एंड इंटरनेशनल में टिम डेविड पीएसएल में अभी जैसा परफॉर्म कर रहा है, आई फील इज द नंबर वन। डेविड मिलर एक्सपीरियंस है, सैम बिलिंग्स, जिमी निशम, मैथ्यू वेड, थिसारा परेरा इज आल्सो देयर इन द लिस्ट। तो आई डोंट थिंक ही विल बी पिक्ड, बट मैंने उसको भी डाला है। मैथ्यू वेड को भी मुझे नहीं लगता कोई पिक करेगा, मतलब हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा मैं टीम से तो हाँ पूछ हो सकते हैं। सकता है क्योंकि ज्यादा टीम से, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिमी निशम का जाएगा, बिकॉज जिमी निशम कैन बोल एज वेल। ऑल ऑफ द प्लेयर्स आर वेरी यूनिडिमेंशनल, at या least Jimmy Neesham can bowl as well. Wade can keep, but ठीक है, Wade is Wade. थिसारा परेरा से bowling करा सकते हैं, लेकिन I think Jimmy Neesham will be the highest इस list में। can be also a big buy, but हुडा I will feel that definitely be a big buy। मुझको लगता है हुडा विल फिनिशर्स में, इंडियन फिनिशर्स में हुडा विल बी द बिगेस्ट बाय, क्योंकि ऑफ लेट उसका okay. फॉर्म काफी अच्छा रहा है और उसका तो काफी एक्सपीरियंस भी हो गया, राइट? उसने कितनी टीम्स के लिए खेले हुडा ने। हुडा विल बी बिग दिस टाइम। So if you have to pick maybe so you'll pick Huda and you'll pick Jimmy Nisham, right? हुडा एंड निशम फॉर मी। So I am picking Shah Rukh Khan and yeah, टिम डेविड। Tim. I'm picking Tim David, but let's see. Yeah. So anyways, let's move to the death bowlers category now. So these are the 21 death bowlers, 13 international and 8 Indians. हर्षल पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, नटराजन, सिड कौल, मोहम्मद शामी, भुवी, कार्तिक त्यागी। ये लास्ट तीन को अगर आप डेथ बॉलर बुलाना चाहते हो तो ठीक है, वरना दे आर जस्ट पावर प्ले बॉलर्स। भूवी इज एंड अ पावर प्ले बॉलर यार, बट हाँ ओके। हाँ, बट एसआरएच के लिए ही यूज्ड टू डू द जॉब, He यॉर्कर्स used to काफी do। मारता था। हाँ, and Lockie Ferguson I have ranked as number one, and my number two is a big surprise for not for you but for the viewers. David Willey is my number two. Chris Jordan just because of the experience. I know Chris Jordan को जिमी निशम ने धो दिया था वर्ल्ड टी20 में, but I'm still backing Chris Jordan because he bowls well when there is no pressure. Pressure में obviously he cracks. Josh Hazelwood is going to be a big buy. कागिसो रबाडा के बारे में सब लोग बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इज दैट गुड एट डेथ बॉलर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल द फाइव, टॉप फाइव और टॉप सिक्स? यार आई विल पुट सबसे पहले बोल्ट ऑन टॉप, ठीक है, बिकॉज बोल्ट इज अ प्रूवन प्लेयर यहाँ पे, ठीक है। लॉकी फर्ग्यूसन वी कुड नॉट सी मच ऑफ हिम बिकॉज केकेआर वाज प्लेइंग पैट कमिंस, बट आई विल पुट ट्रेंट बोल्ट सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आई विल पुट हेजलवुड एंड देन आई विल पुट इन अदर प्लेयर्स, एंड डेविड विली आई एम लुकिंग एट हिम एज मोर एज एन ऑलराउंडर, नॉट जस्ट अ डेथ बॉलर। तो आई बट थिंक इस लिस्ट में डेविड विली एंड ट्रेंट बोल्ट विल गो फॉर द हाईएस्ट। नहीं, इसमें क्या है कुणाल की जो डेथ बॉलर्स हैं जो ऑलराउंडर्स भी हैं, मतलब मैंने उनको एज अ डेथ बॉलर रेट किया है क्योंकि आई फील दैट इज अ मोर क्रिटिकल स्किल देन ऑलराउंडर। बट ऑब्वियसली इसमें जैसे डेविड विली हो गया, और भी जैसे ड्वेन ब्रावो भी हो गया, तो ये कुछ लोग हैं जो दे कैन बैट आल्सो, दे कैन बैट बिग एक्चुअली। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये इनका वैल्यू थोड़ा ज्यादा और रहेगा। ब्रावो का तो मुझको लगता है सीएसके ही खरीदेगी, ठीक है। आई डोंट थिंक एनीवन एल्स वुड लाइक टू गेट ब्रावो नाउ।
but CSK will definitely go for him. What do you think about Perth Scorchers का star Andrew Tye, AJ Tye? AJ हाँ Tye, यार, he did not have good IPL, very good IPL last 2 seasons. And I think last mhm. season he was pretty good. Otherwise, he's been average in IPL. But हाँ, and he had a good big bash, though. He should get a good contract this Adam time. Milne, I think Mumbai का part था last time. So I don't know But he if could he not get will. matches because Mumbai had a lot of players. बाकी इसके अलावा और भी Hmm. players हैं, जेसन बेरेंडॉफ हो गया और एक दो और थे, I don't Hmm. remember the names, लेकिन these guys can come Yeah. in. I think we are going to miss Sam Curran a lot, right? यार Sam Curran को होना चाहिए था IPL में, बहुत मजा आता है उसको देखने में. और जिम्बाब्वे का ओनली प्लेयर हु इज ऑन द लिस्ट इज ब्लेसिंग मुजराबानी, तो वो भी, Sarabanya. उसको भी मैंने डेथ, क्योंकि ही एक्चुअली बॉल्स वेल इन द डेथ, उसको देखा है मैंने 2-3 बार डेथ में. एंड आई हैव रेटेड I have a दुश्मन चमीरा, टिमोल मिल्स, लुंगी एनगिडी. टिमोल मिल्स एक्चुअली 100 में बहुत अच्छा बॉलिंग किया था. ही कैन बी वन ऑफ द सरप्राइज पिक्स, टिमोल मिल्स. यार मुझको तो अभी से फीलिंग आ रही है कि कोई डेथ बॉलर ही सबसे कॉस्टली जाएगा इस बार, बिकॉज डेथ बॉलर्स लाइक यू सेड उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है. एवरी टीम नीड्स डेथ बॉलर्स. लुंगी एनगिडी भी बिक जाएगा मतलब. हाँ, लेकिन ये जैसे ठीक है, मतलब ही इज गुड. कार्तिक त्यागी भी बिकेगा, लुंगी एनगिडी जिसको मैंने बॉटम में रखा है. एनीवेज, तो नाउ लेट्स मूव टू द ओपनर्स. ओपनर्स में इंडिया में 5 ओपनर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो श्योर शॉट है. इसमें एक्चुअली ओपनर्स इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज जहां पे एक्चुअली ओवरसीज में वी हैव lot of talent रियली गुड in प्लेयर्स. overseas. लॉट ऑफ रियली रियली Really गुड good प्लेयर्स. players. लेकिन या आई मीन फाफ डू प्लेसी, जॉनी बेस्टो, इन दोनों में मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब ये टॉप 4 और 5 में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किसको कैसे रैंक करूं. बट मैंने ठीक है, फाफ डू प्लेसी क्योंकि ऑलवेज हैज दैट कंसिस्टेंट डिस्प्ले, तो मैंने उसे 1 पे रखा है. बट ये टॉप 5 जो है, आई थिंक ये पांचों के 5 काफी अच्छे हैं एंड दे कैन ऑल गो फॉर रियली बिग बक्स. अगर एक टीम को ऑक्शन में शुरू में ही नहीं मिल पा रहा है ओपनर, जैसे टीम्स लाइक एसआरएच या फिर आरसीबी जिनके पास एक भी ओपनर नहीं है, तो दे कैन रियली बेट बिग ऑन दिस प्लेयर्स, मुझे ऐसा लगता है. तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ एन आई ओपनर फील इज एक्चुअली द ओपनर कैन बी वन ऑफ द, बट उनका सप्लाई बहुत है, मतलब बहुत लोग हैं एक्चुअली. मतलब सप्लाई ओपनिंग बहुत है. एक्चुअली क्या मिडिल ऑर्डर भी ओपन कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हाँ, कैन आल्सो ओपन. agreed. I just feel इस लिस्ट में ईशान किशन and Quinton de Kock have an edge because they can keep as well. So maybe they will be slightly expensive, or slightly more And what costly in the about whole list. And Johnny, Vridhiman Sahab also can keep. Riddhiman Just Saha will looking be at good bet. He can also keep. Vridhiman Saha, देवदत्त पडिक्कल का क्या लगता है कुणाल? देवदत्त पडिक्कल, Devdutt Padikkal will also be very handy, right? An Indian opener. his strike rate has been like a bit like KL Rahul जैसा हो गया है उसका भी, मतलब he doesn't give that flying starts जो चाहिए होता है, जो ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, मे बी शिखर धवन ऑल्सो, जॉनी बेस्टो, ये लोग जैसे दे सकते हैं. सारे ओपनर एक्सक्लूसिव हैं यहाँ पे besides that guy. इनफैक्ट मुझे यार लगता ओपनिंग तो है नीतीश राणा इन सब से भी करा ही सकते हैं वैसे, और प्लेयर्स हैं ओपनिंग करने के हाँ लिए. हाँ, बट बट ये लेट्स, ठीक है, इवन लुइस के बाद देखते हैं जैसे एलेक्स हेल्स, जेम्स वेंस, जो कि बीबीएल में एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. एलेक्स हेल्स, पॉल स्टर्लिंग हैज बीन हैविंग अ ब्रिलियंट टाइम. ही हाँ, हैज पॉल बीन स्टर्लिंग डूइंग, काफी अच्छा प्लेयर है. काफी कितने टाइम से इतना एक्सपीरियंस है. पॉल स्टर्लिंग इस बार बिकेगा अच्छा. फिटनेस नहीं और है उसके पास, हाँ, बट ही इज क्वाइट गुड एक्चुअली. मतलब इज क्वाइट गुड. पीएसएल में एक्चुअली वो बोल रहे थे कि स्पिनर्स को यूज करो उसके अगेंस्ट, बट एक्चुअली अब वो स्पिनर्स को भी मारने लगे हैं और बहुत बुरा मार रहे हैं वो स्पिनर्स. एंड रहमानुल्लाह गुरबाज है अफगानिस्तान का अपकमिंग प्लेयर, ही इज आल्सो क्वाइट गुड एक्चुअली. So this is a very good list, and I think all these 16 players will be sold. I'm quite sure that all these 16 players will find a team. So, but Kunal, if you have to pick the most expensive among these two, so whom will you pick? I'll pick Ishan Kishan and Quinton de Kock. I'll pick Ishan Kishan and
एज फैक्टर देखते हुए मे बी आई विल पिक जेसन रॉय. जेसन रॉय इज यंग राइट. पता नहीं. कंपेटिवली यंग, लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं खेल, they are not going to play the whole season, right? I mean, I think Jason Roy will play क्योंकि I think Test series England की, तो Jason Roy will not fly in early, हाँ right? तो जिस हाँ, तो आई Jason थिंक Roy शायद पूरा जेसन दिन रॉय कैन खेलेगा, गो तो गो फॉर. जेसन रॉय ने इंडिया में अच्छा बैटिंग भी किया था तो मे बी यार जेसन उस रॉय हिसाब से. हमेशा अच्छा खेलता है यार. यार जेसन रॉय इज हम्म, कंसिस्टेंट, टू बी ऑनेस्ट. देखा तो कंसिस्टेंटली रन्स बनाता है. he's not, he has been in good form since a while now. हम्म, David Warner, let's see if a team, David Warner can actually be a good bet as a captain, but not sure who will हम्म. take him as a captain now. बट मुझे क्यों लगता है उसको नहीं लेंगे एज अ कैप्टन बिकॉज दे आर ऑल हैविंग दिस नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम एसआरएच के साथ उसका जो भी एपिसोड हुआ. तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी गिवन. मतलब आई डोंट थिंक एक्चुअली ही इज गोइंग टू बी बॉट फॉर अ लॉट. ही विल गेट नॉट अ बिग अमाउंट contrary to what people are saying. I think David Warner will be a small buy. Jason Roy, Evan Lewis, ये दोनों I think David Warner से ज्यादा and Johnny Bairstow, ये दोनों तीनों ज्यादा जाएंगे उससे. Anyway, Kunal, let's move to all-rounders. तो All-rounders, they're always very interesting. यार आज के परफॉर्मेंस के बाद के पहले से ही मैंने जेसन होल्डर को एक्चुअली नंबर 1 पे रखा हुआ था. जस्ट फॉर द रीजन दैट ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर ऑफ स्पिन. मतलब आज का ओडीआई में भी हम लोग ने देखा Jason Holder is a very good player of spin. He can bowl in depth. He can bowl in power play. He can bat in as a finisher. He can bat in the middle order. So I think I'm somehow going to go with Jason Holder as my top all rounder international में. And obviously India में तो बहुत choices हैं. I mean we are having lot of choices. राइट 14 चॉइसेस मैंने पिक किए हैं बट राज बाबा को मैंने एक्चुअली नंबर 4 पे रखा है. हु वाज द स्टार ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप विन Yeah, लास्ट what to नाइट. find. Yes. क्योंकि वो पेसर है. मतलब ही इज अ जेन्युइन पेसर एंड ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन. एंड युवराज सिंह पे मॉडल किया है उसने अपने बैटिंग. उसके फादर युवराज सिंह के कोच थे. बट व्हाट डू यू थिंक कुणाल? टेल अस अबाउट सम ऑफ योर favorites in this. Yeah, foreigner all-rounders में Jason Holder only looks good. Sean Abbott, I'm not sure if Indian teams might pay a lot for Sean Abbott. मतलब he had a very good BBL, लेकिन देखते हैं. Mitch Marsh, is Mitch Marsh fit? सबसे पहले, do we know that? So, Mitch Marsh Mitch Marsh can be deserve pretty good. I think last season is अच्छा. Mitch Marsh यार deserves यार if a he, good amount. यार if he's fit, yes, but उसके fitness की बहुत issues हैं. Shakib has failed year after year after year. यार I'm not sure if this year someone will buy him for a big amount. Liam Livingstone, यार फॉर्म तो अच्छा चल रहा है लियाम लिविंगस्टोन. तो विकेट्स भी ले रहा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. लियाम लिविंगस्टोन Livingston, कैन, अभी अभी वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेगा नॉट एज अ बैटिंग ऑलराउंडर. क्योंकि अभी तो वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन सब कुछ डाल रहे हैं. एंड वो काफी इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकता है. मुझे ऐसा लग he रहा है can be आरआर में interesting भी players. आरआर में शुड हैव टेकन अ चांस एंड मे बी रिटेन्ड हिम. पता नहीं, मुझे ऐसा फील आ रहा है आरआर ने थोड़ा बहुत मिस कर दिया. अगर सारे बैट्समैन को ही रिटेन कर रहे थे तो भाई लियाम लिविंगस्टोन को भी ले ही लेते. But I'm really strong about Sean Abbott and Mitch Marsh. I think Sean Abbott, he's an experienced guy, लेकिन उसने अभी बीबीएल में कुछ परफॉर्मेंस दिया है which are not which are just amazing performances. Like उसने 43 of 20 मारा है जब टीम को जरूरत था. एक मैच में उसने 44 से चेज करा दिया. एंड ही इज अ वेरी गुड फील्डर. कुछ अमेजिंग कैचेस लेते हैं. He's been the shining light of BBL and अब वो BBL का वैसे all time highest wicket taker है Sean Abbott. तो it's very sad कि people remember him for that Philip Hughes का जो accident था. But I feel Sean Abbott has more to him as a cricketer. And डेविड वीजा के बारे, डैरिल मिचेल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस यार. डैरिल मिचेल को तो हम कभी डिस्कस ही नहीं करते. उसने यार न्यूजीलैंड के प्लेयर्स सेमीफाइनल कम आ जिताया रहे था हैं यार. डिस्कशन में. हाँ, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स कम आ रहे हैं डिस्कशन में. इवन दो सच अ चैंपियन टीम. उसने सेमीफाइनल जैसे जिताया था जिमी निशम के साथ. तो दैट वाज एंड रिसेंटली ही गॉट द He can be. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आल्सो. Yeah, he can be an interesting prospect. He can be. Indian all-rounders में तो यार शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, ऋषि धवन. ऋषि धवन इस बार I think he did not play last year, right? ऋषि धवन.
This time he'll go for a lot. He had a really good season. I mean, really good domestic season. राहुल तेवाटिया सबका पता नहीं. कृणाल पांड्या को कोई खरीद लेगा because he is experienced. हाँ, कृणाल पांड्या को तो खरीद लेंगे. ऑलराउंडर्स तो सब बिक ही जाएंगे, लेकिन हाँ, these will be big buys. शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, ऋषि धवन, राज पावा, maybe तेवाटिया, कृणाल पांड्या. राहुल तेवटिया एंड कृणाल पांड्या में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता. मैंने एक इसमें एक जो डार्क हॉर्स डाला है वो है आर साई किशोर, जो तमिलनाडु के लिए खेलते हैं. मुझे लगता है ही कैन बी अ गुड बाई. अनुकूल रॉय तो पहले से ही था, मुंबई इंडियन के लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर था. तो अनुकूल रॉय आई थिंक डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग स्किल्स कोई स्क्वाड में तो डेफिनेटली जाएगा. अभिषेक शर्मा एसआरएच में था पहले, एंड जलद सक्सेना, पवन नेगी, ये सब डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं. बट कुणाल, आई वांट टू गिव यू वन सरप्राइज पिक. मुझे लगता है ड्वेन प्रिटोरियस इज गोइंग टू गो. ड्वेन प्रिटोरियस इज गोइंग टू बी सोल्ड, आई फील. मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है. ही इज अंडररेटेड, रियली अंडररेटेड, ड्वेन प्रिटोरियस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ड्वेन प्रिटोरियस? Because even South Africa does not play in all matches. Maybe he's underrated. But then I don't think that highly of him. Maybe I've not seen him much. If you've seen him, maybe you know better. एंड डेविड But विजा. I've not seen Pretorius. डेविड वीजा And, अच्छा कर रहा था नहीं कितना वर्ल्ड कप में, कितना अच्छा फॉर्म पे था हाँ, डेविड वीजा वर्ल्ड कप में, बाप रे. नहीं वो पीएसएल Maybe. में भी अभी अच्छा कर रहे हैं. ही इज डूइंग अच्छा गुड इन अच्छी पीएसएल थी. आल्सो. तो डेविड विजा इज अ जेन्युइन, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी बॉट. आई थिंक इसमें से अगर मैं कार्लोस ब्रैथवेट को छोड़ दूं एंड मे बी पवन नेगी, जलन सक्सेना को छोड़ दूं, तो आई थिंक एवरीवन इज गोइंग टू गेट बॉट बाय सम टीम्स. देयर आर 10 टीम्स गाइस, तो आई थिंक सबके लिए. बट माय टॉप पिक्स आर जेसन होल्डर एंड शार्दुल ठाकुर. What are your top picks, Kunal? Jason Holder, and you are going for which Indian all-rounder? ठीक है यार, मैं ऑलराउंडर में बोलता डेविड विली, बट नहीं, ठीक है. बट हाँ, जेसन होल्डर एंड इंडियंस में शार्दुल ठाकुर ही रहेगा. शार्दुल ठाकुर हैज, यार इट्स ऑब्वियस, वो हो गई शार्दुल ठाकुर. Okay, let's move to batters now. Batters. ये तो अच्छा खासा पूल है. मतलब इसमें सिर्फ मैंने 23 दिखाया है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आल्सो. बट इंडियन बैटर्स पे काफी फोकस रहेगा. एंड हमेशा रहता है इंडियन बैटर्स पे. I am going to say Robin Uthappa may get a good bye, क्योंकि लास्ट टाइम प्लेऑफ्स में उसने जैसा परफॉर्म किया, एंड ही वाज नॉट अ रेगुलर मेंबर ऑफ द टीम. देयर मे बी 10 टीम्स में से ऐसा कोई टीम होगा जो सोचेगा हम रॉबिन उथप्पा को अभी रेगुलर खिला सकते हैं. और उसमें 1-2 सीजन बचा हुआ है अभी भी. मुझे लगता है रॉबिन उथप्पा. Well, you've always केस been a big fan of Robin Uthappa, so let's see. या आई हैव बीन अ बिग फैन. एंड केस भरत, आई स्टिल थिंक केस भरत इज आल्सो, लास्ट टाइम उसने जैसा आईपीएल खेला आरसीबी के लिए, तो आई फील केस भरत इज गोइंग टू गो फॉर अ बिग मनी. एंड Yash Jul also. Yash Jul is the future star. So I think Yash Jul Upcoming is star. going. Yeah. Yeah. But what are your picks? Rassi van der Dusen definite इस बार तो आ जाएगा ना आईपीएल में. पक्का है, या इस पक्का. बार I think last time भी आ ही गया था almost. बाकी I think yeah, Shreyas Iyer and RBD यहाँ पे pretty much. I was expecting a lot from Akram as well, लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा कम, लो था recently, तो maybe he might not go for that much. But हाँ, these two will be there, and maybe some team might decide to take a big bet on Devon Conway. Who knows? Devold Brevis, I'm giving you a prediction right now. Devold Brevis will be taken to RCB. जो number 10 पे मैंने लिखा है Devold Brevis, who is the baby AB, is going to go to RCB. सुरेश रैना को कोई लेगा इस बार? केदार जाधव और सुरेश रैना को? Well, सुरेश रैना को सीएसके ले लेंगे यार, और कोई शायद ही ले सुरेश रैना को. लेकिन केदार जाधव को नहीं लेंगे. अंबती रायडू और मनीष पांडे के तो अभी भी कुछ साल बचे हुए हैं यार. मतलब 2-3 साल तो खेल सकते हैं. अंबती रायडू इज अ गुड, जब फॉर्म में रहता है तो. अंबती रायडू का डोमेस्टिक फॉर्म पता नहीं कैसा था, but he can be a good middle order player, right? He can hit big shots as well, excellent as well at the end. He can be a good addition to the middle order. Manish Pandey तो बिकेगा definitely. तो इसमें से who you think is the top Indian batter, most expensive bid, highest bid on an Indian batter? Shreyas Iyer. So I am also going for Shreyas Iyer and Rassi van der Dusen in the international batters. But I think कुछ भी हो सकता है. डेविड मलान
पे हाईएस्ट बिड तो नहीं लगेगा डेफिनेटली, उसका बट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा अभी, आईपीएल भी उसका इतना अच्छा नहीं करता है, डेविड मलान का। हिटमायर को कुछ लोग फिनिशर एज अ फिनिशर भी देख सकते हैं, मतलब हिटमायर वो रोल कर सकता है, मतलब फिनिशर का रोल, तो मे बी कुछ लोग उसको एज अ फिनिशर देखेंगे, तो मे बी ही कैन गो एक्सपेंसिव, बट राशि कैन डू एवरीथिंग, राशि इज एवरीथिंग इन वन थिंग, सो Yeah, Rasi is going to have a really good लेट्स IPL season. I'm pretty sure about it. Pretty sure. सो कुणाल, मूविंग ऑन टू स्पिनर्स, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास काफी सप्लाई है, आई मीन इंडियंस में अश्विन, राहुल चहर, यूजी चहल, हरप्रीत बरार, शहबाज अहमद जो लास्ट टाइम काफी अच्छा खेला था आरसीबी के लिए, Yeah, हरप्रीत बरार तो Amit अच्छा Mish. ऑलराउंडर है इनफैक्ट, अमित मिश्रा है, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव, मयंक मार्कंडे, विकी ऑस्टवाल जो अंडर 19 का स्टार है, शहबाज नदीम को अभी भी मैंने रखा है, बट मुझे यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग ओवरसीज स्पिनर्स लग रहे हैं, मुझे लग रहा है शामसी विल गो फॉर अ बिग अमाउंट, मुझे लगता है जैम्पा विल गो फॉर अ बिग अमाउंट, Zampa भी मुझे लगता काफी है अच्छा है। जैम्पा ने वर्ल्ड कप हसरंगा जीता है भाई, because मैं तो उसको मैन ऑफ द Zampa सीरीज बहुत अच्छा मानूंगा। स्पिनर है भाई, सच में Zampa बहुत बहुत अच्छा, is really good. आई एम Hasaranga आई can एम bat आई as एम well. आई एम टेकिंग अ बिग बेट एंड आई एम सेइंग जैम्पा मे बी गोज फॉर द हाईएस्ट अमाउंट हियर, एंड हसरंगा ऑलराउंडर है, प्लस बहुत अच्छा स्पिनर है, इमरान ताहिर स्टिल गॉट इट मैन, पीएसएल में उसका टीम अभी तक अनबीटन है, जो कि रिजवान का टीम है, ईश सोदी, आदिल रशीद, फेबियन एलन, सैंटनर, ये सारे भी अच्छे चॉइसेस है, आई डोंट थिंक दे आर बैड ऑप्शंस टू हैव, लाइक Yeah, आदिल रशीद काफी अच्छे फॉर्म में है, काफी आदिल अच्छे फॉर्म रशीद में इज आदिल bowling रशीद विल really डेफिनेटली, beautiful. Actually, I should not have put him at 6. Maybe I think he's he should Vanundu be at 3 Haslinga. भाई, He should he be should at be 3. at 3 Adil I Rashid think, should be at 3. Yeah. Yeah. Maybe but Akil I think Hossain भी इसमें मैंने एक मिस किया है, आज जैसे मैंने अकील होसेन को बॉलिंग करते हुए देखा, तो आई थिंक अकील होसेन विल आल्सो मेक दिस लिस्ट, अकील होसेन कैन बी अ सरप्राइज इन दिस लिस्ट, पता नहीं देखना पड़ेगा, बट एनी अदर, एस्टोन एगर है और भी बहुत स्पिनर्स हैं, तो एनी अदर स्पिनर यू अश्विन थिंक माइट, कुणाल? कोई नहीं खरीदेगा अश्विन को, डू यू थिंक अश्विन को कोई खरीदेगा रियली? आई डोंट थिंक सो। वैसे वैसे इंडिया में बहुत है, अक्षर पटेल है, रवि, बहुत प्लेस है वैसे, मुझे लगता है इंडियन स्पिनर्स में चहल माइट गो फॉर मुंबई द हाईएस्ट बेट, क्योंकि मुंबई को मुंबई को एक स्पिनर चाहिए कुणाल, मुंबई किसको खिला लेगा अभी? आई थिंक दे विल गो ऑल आउट फॉर चहार एंड क्या नाम है दूसरे का, चहार एंड राहुल चहार एंड यूजी चहल, ऑल आउट फॉर दीज टू प्लेयर्स, whoever comes first. इंडियन स्पिनर्स में हम्म, देखना इन दोनों के लिए डिमांड बहुत होगी, चहार के लिए, चहल की, बिकॉज चहल इज बॉलिंग वेल राइट नाउ, चहार वाज गुड हम्म, लास्ट सीजन, अश्विन, हम्म। हाँ अश्विन भी डिमांड में तो रहेगा, बट आई थिंक दीज हाँ, अदर टू अश्विन आई स्पिनर्स विल गो थिंक फॉर मोर। हमेशा रहेगा डिमांड में, क्योंकि उसमें कुछ है, मतलब वो कैप्टन वैप्टन रह चुका है, एंड इज अ गुड स्ट्रेटेजिक माइंड, ही हैज अ गुड स्ट्रेटेजिक माइंड, तो मे बी आई एम गोइंग, मे बी अश्विन, लेकिन वही है कि अभी एज इज नॉट ऑन हिज साइड एंड ही मे गो फॉर अ लो बेट, बट आई फील डेफिनेटली हाईएस्ट बिड किसके लिए रहेगा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी यूजी चहल। I also feel it's going to be Yuzi Chahal. Foreigners में I think शामसी और जाम्पा, फॉरेनर्स में इट्स डिफिकल्ट टू से, शामसी, जाम्पा और रशीद में से कोई भी हो सकता है, whosoever comes first. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी जैम्पा, सो Zampa. I लेट्स think मूव टू it will the player who comes first. Yeah. सो लेट्स मूव Power टू play पावर bowlers. प्ले बॉलर्स, तो अभी हमारे पास बहुत ऑप्शन है, श्रीशांत और अर्जुन तेंदुलकर ये लोग भी है लिस्ट में, ये तो यार आई यार अर्जुन तेंदुलकर को तो मुंबई वाले खरीद लेंगे, श्रीशांत तो कोई खरीदेगा? डिफिकल्ट। श्रीशांत को आरआर डेफिनेटली नहीं खरीदेगा, उसके लिए उसने नहीं खरीद सकता एक्चुअली, आरआर यू कैन नेवर नो, यू कैन नेवर से कि आरआर क्या करेगा, बट दीपक चहर इज गोइंग टू गो मिलियन बक्स, जो जो उसका बैटिंग है, इनफैक्ट आई शुड हैव मे बी पुट हिम इन द ऑलराउंडर कैटेगरी, Yeah, I think आई he's an थिंक all-rounder now. Yeah. या, तो दीपक चहर इज श्योर टू गो, एंड पैट कमिंस इंटरनेशनल में, या टिम साउदी, या मार्को यानसन, कौन इसमें से, ये तीनों में से कौन लग रहा है? Yeah, I think Tim Saudi has not been that great in IPL कभी भी. So I think it will be between Tim Cummins, I mean Pat Cummins.
Pat Cummins is the clear front runner maybe. Where did you put Josh Hazelwood? जॉश हेजलवुड को तो मैंने उसमें डाला ना, डेथ में डाले। अच्छा, हम एक बार ये देख लेते हैं कि किसके किसके पास, जैसे मतलब अभी गैप्स है, तो डेथ बॉलर तो सबको ही चाहिए, तो फिनिशर्स भी आई थिंक सबको चाहिए, बट सीएसके और केकेआर के लिए डेथ बॉलर और फिनिशर्स। तो अगर हम फिनिशर्स देख रहे हैं, मतलब कि हम केकेआर के पास एक भी फिनिशर नहीं है, तो मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि शाहरुख खान के लिए जाएंगे केकेआर, लेकिन केकेआर का पर्स कम है, तो दे मे गो फॉर दिनेश कार्तिक। इवेंचुअली वो लोग वही दिनेश कार्तिक को ही लेंगे, एंड इंटरनेशनल आई थिंक वो लोग नहीं लेंगे। एंड वैसे ही मुझे लगता है सीएसके को डेथ बॉलर चाहिए, तो आई थिंक दे विल अगेन गो फॉर जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड को मैंने इधर डाले, तो आई थिंक दे मे गो फॉर जॉश हेजलवुड, और एनगिडी को नहीं लेके इस बार मे बी दे गो फॉर डेविड विली। दे मे गो फॉर डेविड विली। क्या सब बैलेंस आ जाएगा उनकी टीम में। स्पिनर्स आई थिंक एमआई एंड अदर टीम्स, एसआरएच, एमआई सब में है, तो सब में गैप है मतलब, तो स्पिनर्स का तो अच्छा ही आई थिंक रहेगा इस स्पिनर्स बार। बहुत डिमांड में रहने वाले हैं इस बार। क्योंकि किसी ने स्पिनर को राहुल रिटेन नहीं चाहर किया और है। यार देखिए राहुल चाहर और ये यूजी, ये लोग जाएंगे 8-8 करोड़ के लिए, एटलीस्ट 8-10 करोड़ के लिए। कुलदीप यादव का क्या लग रहा है? अनसोल्ड तो नहीं हो यार जाएगा कुलदीप यार यादव? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट कुलदीप यादव ठीक है, उसको आईपीएल में केकेआर तो खिला ही नहीं रहे थे, ना तो उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। ऑन व्हाट बेसिस विल द टीम सेलेक्ट हिम? आई एम नॉट श्योर व्हाई डिड द इंडिया टीम सेलेक्ट हिम, आई एम नॉट श्योर बट एंड कुलदीप। स्पेशली ओवरसीज में अभी बहुत लोग हैं, तो दे कैन गो फॉर एन ओवरसीज ऑप्शन ऑल्सो। तो फिर भी हरप्रीत ब्रार आई एम श्योर विल गो, शहबाज अहमद भी जाएगा, अमित मिश्रा, केसी करियप्पा, ये सब भी जा सकते हैं। मयंक मार्कंडे तो बहुत साल से ही नहीं खेला, आरआर ने उसको बेंच पे बैठा के रखा है। विकी ऑस्टवल पता नहीं, अभी यंग है, बहुत पिटाई खा जाएगा एक ही कोई मैच में, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। दीपक चहर एंड पैट कमिंस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ये लिस्ट में। विदाउट डाउट। खलील, संदीप शर्मा, ये लोग भी बिक जाएंगे। उमेश यादव, चेतन साकरिया, जैसा तू बोल रहा था, चेतन साकरिया is going he can also bowl at the death, तो चेतन साकरिया may have a good bye. But बाकी I मार्को think जैनसन हो सकता है, टीम्स मार्को जैनसन को भी काफी इंटरेस्ट दिखाएं। ही हैज डेवलप्ड अ लॉट इन लास्ट ईयर, ऐसे भी मुंबई में था वो लास्ट ईयर, तो ही हैड रियली गुड कोचिंग एंड गाइडेंस। मैं इसमें एक सरप्राइज जो पिक बोल रहा हूँ वो है ओबेद मैकॉय। ओबेद मैकॉय के लिए आई थिंक बहुत सारे टीम जाएंगे। इज गुड पावर प्ले बॉलर, गुड डेथ बॉलर। आई थिंक नहीं, ओबेद मैकॉय लेट्स सी, के लिए पता नहीं, आई डोंट थोड़ा लाइक हिम चलेगा। दैट मच, बट लेट्स सी, वी हैव 10 टीम्स, लेट्स Anyway, सी। so this is now let's enter our this thing, Kunal. तो finisher में you said I think you said Jimmy Neesham, right, for international. या So या I'm just writing Jimmy, इंटरनेशनल and you इंडिया के said लिए, I या think इट्स ऐसे should I एसआरके take you ओनली। back? So इंडियन में SRK, हाँ, हुडा, फॉर मी इट विल बी हुडा, या so you are saying Huda, okay, and death bowler में you said I think डेथ बॉलर में you हर्षल said पटेल भी, Harshal हर्षल Patel पटेल इंडिया and से। Harshal Patel and you said Josh Hazelwood या ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट तुमने बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट बोला था। यस हाँ यस, ट्रेंट बोल्ट बोला था। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट एंड ट्रेंट लिख देता हूँ सिर्फ, एंड एचपी, एंड ओपनर तूने क्या बोला था? ईशान इंडियन किशन। ओपनर विल बी ईशान किशन, इंटरनेशनल ओपनर विल बी क्विंटन डिकॉक, ओके, एंड एंड ऑलराउंडर ऑलराउंडर शार्दुल, इंडियन ऑलराउंडर शार्दुल, इंटरनेशनल ऑलराउंडर शार्दुल, में इंटरनेशनल इंटरनेशनल में में डेविड विली, जेसन होल्डर। होल्डर ही रहे, होल्डर 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 या ओके, एंड बैटर्स में क्या लग रहा है? वही श्रेयस श्रेयस अय्यर अय्यर एंड आएंगे। आरबीडी या एंड राशिव एंडरसन। या आरबीडी
पावर प्ले बॉलर्स में इंडिया से इट विल बी DC डीसी obviously. या डीसी एंड DC and पैट PP. कमिंस Okay. And डीसी चहल spinners एंड में चहल UZ एंड चल रही. I feel हाँ युजी चहल एंड रशीद Oh, Rashid. but I just feel Rashid आदिल आदिल लिख देता हूँ. ठीक है. Adil yeah तो what are आई yours हाँ थिंक फिनिशर्स में इंडिया का होगा SRK एंड आई थिंक आई थिंक टिम डेविड है I'll go with Tim David. Yes. तो मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों टिम डेविड, बट इज नॉट गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव. डेथ बॉलर्स में आई फील तेरा क्या था, वही था शायद मेरा. तेरा हर्षल पटेल तेरा था, भी मेरा सेम भी था हर्षल पटेल है. एंड इंटरनेशनल में तेरा दूसरा था मैं लॉकी के साथ जा लॉकी रहा हूँ. हाँ, मैं लॉकी लॉकी फर्ग्यूसन के साथ जा रहा हूँ. लॉक कर रहा हूँ मैं इसको. ओपनर्स में आई थिंक सेम है, ईशान किशन. नहीं, मेरा ओवरसीज में आई थिंक I will go for Jason Roy. Actually, I'll go for Roy. And all-rounders में I think same है, Shardul and Jason Holder. And batters में I think same है, no change. And ये भी same है. ये तो सबसे simple choice है I think. हाँ इसका And सिंपल चॉइस इसमें तो मैं थोड़ा डिफर करूंगा. ओके I think Ashwin is going to Ashwin नहीं, यूजी चैल मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जैम्पा लग रहा है मुझे. तो आई एम गोइंग टू गो फॉर यूज एंड हाँ देखा जाए तो इन जैम्पा. सारे प्लेयर्स में सबसे ज्यादा आईपीएल एक्सपीरियंस भी जाम्पा का ही है नहीं, हाँ मतलब उस वे में. तो दैट्स आवर प्रेडिक्शन. बट हाईएस्ट बिड कुणाल इसमें से कौन सा होगा, हाईएस्ट एवर बिड, वो बताना तुम. हाँ हाईएस्ट बिड फॉर दिस सीजन हाँ, एक इंडिया मुझे और तो एक बॉलर का ही इंटरनेशनल. लग रहा है मुझे लग रहा है इट्स गोइंग टू बी ट्रेंट बोल्ट एंड एंड यूजी चहल एंड बोल्ट यू आर सिंग. ओके. तो मुझे लग रहा है हर्षल पटेल आई थिंक होगा, एंड शाहरुख खान. नहीं, शाहरुख खान या हर्षल पटेल, कौन सा होगा. आई थिंक शाहरुख यू खान सेड होगा वन मुझे इंडियन वन लगता है. इंटरनेशनल राइट हाँ तो ये हटा रहा हूँ मैं. इंडियन नहीं तो में हाँ इंडियन में नॉट चहल इंडियन में दीपक चहर हाँ इंडियन में फॉर मी टू बी दीपक दीपक चहर चहर. वाओ, इंटरेस्टिंग. तो ठीक है. तो यू आर सेइंग दीपक he's a चहर, आई एम strike सेइंग bowler यार शाहरुख खान, एंड आई एम सेइंग लॉकी फर्ग्यूसन. So अभी this तक तो is लॉकी has from never us. gone for a lot let's see देखते हैं क्या होता है. एंड दिस इज फिर प्रतीक से भी लेंगे बाद में. yeah उसका भी व्यूज लेंगे. बट क्वाइट इंटरेस्टिंग टू टॉक कुणाल ऑन दीज टॉपिक्स, yeah एंड काफी मजा आया. तो लेट हाँ अस सी नाउ, ऑल गेट अप फॉर द ऑक्शन ऑन दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड आई मीन. तो देखते हैं क्या होता है. हाँ the coming weekend 2 दिन का ऑक्शन है फर्स्ट डे विल बी इंटरेस्टिंग सेकंड डे तो थोड़ा स्लो हो जाता है आई एग्री विथ योर व्यू पॉइंट. yeah मतलब कि जैसे जो पहले आएगा उनका थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि पीपल विल, हम्म, उनका मतलब बिट्स थोड़ा ज्यादा जाएगा मे बी. हाँ, वो हो सकते हैं. बट कुछ टीम्स होंगे जो लास्ट तक वेट करेंगे मे बी. वो लोग बस इन्फ्लेट करेंगे शुरू वालों को कि हाँ भाई तुम लोग जाओ, इसको बढ़ाओ बढ़ाओ. बट बट हाँ यार इस बार काफी टीम्स है राइट 10 टीम्स हैं तो यार ऑक्शन इंटरेस्टिंग होगा ये ऑक्शन देखने में बहुत मजा आएगा सच में उस दिन मैं बस बैठ जाऊंगा कॉफी वॉफी लेके आई जस्ट बी वाचिंग द ऑक्शन 12th and 13th राइट या मैं भी होप कर रहा हूँ, मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले, देखते हैं होपफुली. हाँ वन गुड थिंग इसकी वीकेंड में तो या एटलीस्ट कैन वॉच अच्छे से cool तो ठीक cool है then but yeah गाइस, दैट्स interesting इट chat फ्रॉम. about auctions yeah Yeah, man, good chat, good chat. So guys, we'll leave you out there, and do let us know in comments who is your pick and who will what, be your. one thing huh who do you feel is I mean RCB is going to go for as captain Abhi if I ask you today what name will you pick
Do you think they'll pick Maxwell as captain? I mean, they still can. Last season uska acha I tha, think and he Maxwell, has been captaining. He has been captaining Melbourne Stars for a while now. Melbourne Stars, he Or can, he's interested for the job और retain भी किया है, तो मुझे लगता है हो सकते हैं. Kohli also likes him, it seems. Hmm. Another interesting choice might be Shreyas Iyer. So थोड़ा long term choice भी नहीं सोच नहीं, सकते हैं क्योंकि Shreyas रहेगा. Shreyas Iyer and Kohli cannot be in. First of all, they can be in the same team, but Shreyas Iyer will definitely look for a team. उसका ऑलरेडी कुछ सेटिंग होगा, मैं श्योर हूँ कि कोई टीम जिसके पास कैप्टन नहीं है, मे बी पंजाब और मे बी कोई और भी टीम्स है आई थिंक जिनके पास अभी कैप्टन नहीं है. को केकेआर के पास अभी कैप्टन नहीं है, आई थिंक केकेआर के पास भी कैप्टन नहीं है अभी. Anyway, we'll cap this discussion. Thanks Kunal, thank you for your time. तो मे बी ऑक्शन के पहले हम लोग एक और बार मिलेंगे तो टू लेट अस हैव एन इनफॉर्मल चैट तो कि कौन कैप्टन रहेगा. So ठीक है, saying goodbye to everyone. Hope you enjoy the auctions and enjoy the IPL. So See you guys. guys.